बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए के चुनाव को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत 4 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। तब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले में उम्मीदवार जतिन वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल जतिन वकील, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 4 उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने बीसीसीआई और बीसीए के संविधान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वक्त भी दिया है। इस मामले में अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही है। तब जतिन वकील ने यह भी कहा है कि स्क्रूटिनी कमेटी ने आपत्तियां तो स्वीकार की, लेकिन उन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बीसीसीआई का नियम ये स्पष्ट है कि 2 कार्यकाल के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है और इस दौरान कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। तब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनकी जगह उनके प्रतिद्वंदी सीधे विजेता भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है। तब अंत में जतिन वकील ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये तय होगा कि बीसीए का नया ढांचा कैसा होगा। ऐसे में आइए सुनते हैं बीसीए के चुनाव को लेकर उम्मीदवार जतिन वकील की प्रतिक्रिया। बीसीसीआई ना બંધારણ અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનના બંધારણને ધ્યાને રાખી અને જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ, બીસીસીઆઈની એડવાઇઝરીના પત્રો, એ બધાનું અર્થઘટન બેઉ પક્ષે પોતાની રીતે સમજાવ્યું. નામદાર કોર્ટમાં દલીલો થઈ. નામદાર કોર્ટ એ તમામનો અભ્યાસ કરી અને એમણે અર્થઘટન કરી અને એમનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે કે 9 વર્ષની ટર્મ આ 4 વ્યક્તિઓની ઉમેદવારોની પૂરી થઈ છે, જેથી એ લોકોને ડિસ્ક્વોલિફિકેશન. અમને મળતી કાયદેકીય સલાહ પ્રમાણે મારું એવું માનવું છે કે એ લોકો એલપીએ ફાઇલ કરે અને નિરલ મહેતા સાહેબે જે અર્થઘટન કર્યું નામદાર હાઈકોર્ટે, એનું અર્થઘટન કદાચ એ ડિવિઝનલ બેન્ચ અથવા એમને કાયદાકીય જે સલાહ મળશે એ પ્રમાણે આગળ ઉચ્ચ અદાલતમાં જશે, તો ત્યાં આગળથી જે નિર્ણય આવે એની ઉપર આધાર રાખે છે. બીસીએને તો કોઈ એક સંસ્થા છે, બીસીએ સંસ્થા છે, બીસીએને કોઈ નુકસાન નથી થતું. બીસીએ સારા સફળ એડમિનિસ્ટ્રેટરોની જરૂર છે અને એનાથી આ એક હત્તુ તો મારી સત્તા છે નહીં. હું પણ કાલે કદાચ હોઉં ના હોઉં તો બીજા કોઈ વ્યક્તિ આગળ આવશે. એનાથી બીસીએને કોઈ દિવસ નુકસાન નથી થતું. રણનીતિ અમારે કાંઈ નથી નક્કી કરવાની. નામદાર આ 4 વ્યક્તિ જે ડિસ્ક્વોલિફાય થયા છે, એ 4 વ્યક્તિ અપીલ ફાઇલ કરશે તો ત્યાંથી જે અર્થઘટન આવશે એની પર આગળનો ઇલેક્શન પ્રોસેસ થશે. તો 30મી સુધીનો સ્ટેજ છે. 1 તારીખે એમણે કાઉન્ટિંગ આપવું જ પડશે. रॉयल सत्यमेव जयते पैदल जीतसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।